against, what do you call it? What's his name? The Parliamentary Affairs Minister for threatening and intimidating me in public. Kiran Rijiju. I'm going to file a privilege against him. Sagarika Ghosh has already filed a privilege. I will also file a privilege against Kiran Rijiju. Everybody heard my speech, and that heckler from the BJP got up on cue and started heckling. And I expected from him nothing new about that. But every point I said in my speech was absolutely correct. There was nothing parliamentary. They're killing the constitution by 1,000 cuts. And I gave an educated research speech. Unfortunately, the people in the BJP neither understand the language nor the content. And you had the Parliamentary Affairs Minister stand up in complete violation of parliamentary privilege and rules and stand up and threaten and intimidate me. And I'm going to file a privilege. I've already complained to the Inter-Parliamentary Union. When we went and spoke to the Speaker said that he will watch it and he will delete it. He will delete what the Parliamentary Affairs Minister said. So I think, I'm definitely going to file a privilege. I've already complained to the IPU. This kind of intimidation, this kind of threatening, they tried this with me last year. They didn't succeed, and there's no way they're going to get away with it. महुआ जी, अगर आप थोड़ा हिंदी में बोल सकें। The BJP is only saying that they took an objection when they have no objection. They had no objection to what? I quote from my speech. The Rajnath Singh, who is the Honourable Defence Minister, for whom I have the greatest regard, he brought up, all of you heard, he named Justice H.R. Khanna. Yes or no? Did he name him? Yes or no? I'm asking you. Did he name him? Yes or no? I'm asking the media. Surely they have not bought you out so much that you can't even say yes or no. Did you say yes or no? जब राजनाथ सिंह ने H.R. Khanna का नाम लिया कि नहीं? आप हाँ या ना बोलिए ना आप लोग. See, if you don't talk, how can I say it? But you are talking, ma'am. No, Everybody knows what Rajnath Singh said. No, everybody doesn't आप know. हमारा इस्तेमाल थोड़ी कर सकती हैं अपने पॉलिटिक्स के लिए। आप कह रही हो क्या आपको खरीदा है कि नहीं खरीदा है? आप अपना जवाब दीजिए ना मैम। आप क्या जवाब दें? आप जवाब दीजिए। हम आपकी पॉलिटिक्स में शामिल थोड़ी हो सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने बोला कि नहीं बोला। आप तो बोल रहे कि आप लोया बोला, तो राजनाथ सिंह बोला कि नहीं बोला? आप अपना जवाब दीजिए ना। ऑनरेबल राजनाथ सिंह ने स्टैंड अप इन पार्लियामेंट और उन्होंने कहा कि जस्टिस H.R. खन्ना ने 76 में बहुत करेज दिखाया और उनका जो ऑटोबायोग्राफी है रोजेस एंड थॉर्न्स, उसमें उन्होंने ये लिखा है और उन्होंने 1976 में डिसेंट जजमेंट दिया था। ये राजनाथ सिंह ने भाषण में कहा था। तो अगर कोई जज को पहला कोई नेम किया है वो राजनाथ सिंह थे। मैंने उसके जवाब में कहा कि राजनाथ सिंह ने जस्टिस H.R. खन्ना की बहादुरी की जिक्र किया और उन्होंने कहा कि H.R. खन्ना ने 1976 में डिसेंट किया। तो मैंने कहा कि मैंने भी ये सुना और जस्टिस खन्ना 1976 में जिक्र किया और जस्टिस खन्ना की लंबी उम्र थी। उन्होंने 32 साल तक उन्होंने उसके बाद रहा और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। And then I said that unlike Justice Loya, who is resting in peace well before his time. My exact words were, unlike Justice Loya, who is resting in peace well before his time. मैंने किसी की हत्या की बात नहीं की, मैंने किसी की मर्डर की बात नहीं की, मैंने किसी बीजेपी के ताल्लुकात की बात नहीं की। अगर बीजेपी की गिल्टी कॉन्शियंस उनको उछलने के लिए मजबूर करता है तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है।